अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो सीज़न है वो मानसून का है और डेयरी फार्म में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आते हैं मानसून में। तो इस चैलेंजेस को कैसे कवर किया जाता है, इसके लिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ डॉक्टर अबीब साहब के साथ, जो कि डेयरी एक्सपर्ट है और उसका काफ़ी ग्रिप है और नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, और बहुत से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। तो आज मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे फेस किया जाए। So first, my question from Dr. Habib Saab, that's what are your suggestion and preventive measures should adopted by the farm management or farmers to avoid the complication and challenges in monsoons? So kindly please tell us in shorts that the farmer can adopt this management and best practices to avoid some complication and challenges. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. As you know, Dr. Abid said, this is monsoon every year increasing, intensity increasing, and the time also increasing due to global climate change. But everywhere in America now, in America here, in Germany, this weather change is going too much extreme, too much hot, too much raining. So this increasing challenge in dairy. Already before monsoon, we have this lumpy skin disease, very serious and big outbreak in Sindh after this came in Punjab. And also every year or every 2 years we have 3-day sickness. And both these two diseases transmitted by mosquitoes. So there is more risk factors coming after monsoon. More water, more mosquito, more fly, more spread of disease. That is a big risk factor. Then it is also mud. This will increase also slippery, mastitis, lameness, and also feed transportation, feed mycotoxins in feed, or more risk factors. But most dangerous now to be concentrate is lumpy skin disease and the 3-day sickness. जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर साल जो इंटेंसिटी इन वेदर वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब गर्मी भी बढ़ रही है वर्ल्ड क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से, और सर्दी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह इस साल जो मानसून है वो एक्सपेक्टेड है कि वो भी ज़्यादा हो। मानसून में ज़्यादातर चैलेंजेस जो आते हैं फार्मर को, लेमनेस, मेस्टाइटस, और अभी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ आजकल चल रही है जैसे कि LSD है और 3-डे सिकनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल लॉसेस काज कर रही है। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर के बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसके प्रिवेंटिव मेजर के लिए हमारे फार्मर को कौन सी स्ट्रेटजी प्लानिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। व्हाट्स यू सजेस्ट द प्लानिंग एंड द प्रोटोकॉल शुड बी अडॉप्टेड बाय आवर फार्मर टू cope the situation with the 3-day sickness and LSD? Yes, sir. Before we speak about disease itself, causative agent vaccine, we should take some prevention steps before this. We know these arthropods, both are arthropods virus, transmitted by mosquito. Then we need to have to make, try to make, we will not make completely cleaning, but we will try to make fast cleaning. We can store some sand because maybe you not found sand in this weather. So you have one bunker or one area, you can make one big sand. So you try as fast as possible to make drain to this water during raining. And if there is extra water, you can try to clean it and try to put sand, limestone, spray disinfection, your biosecurity. This before you think in vaccination. This is must be planned before. Drain system and bedding. Then if we have some collection of water, you can put some diesel, or you can put this, used oil. There is black oil, used oil. You can put also this, try to minimize mosquito and the use products for fly also. Try to decrease mosquito, fly. Let's keep your cows comfort as possible and with good immunity. As you know, Dr. Abid said, this is vaccine is not giving 100% protection. No any vaccine and this should be clear. No any vaccine in the world is giving 100% protection. We need to make vaccine with biosecurity, with preventive measurement also. All must be together. So we can decrease morbidity, decrease mortality, decrease clinical signs. It's okay, this vaccine, but vaccine will not stop 100%. Fortunately, we have now lumpy skin disease, Nifling vaccine, Nifling virus, like Lumpvax, like this.
These can go to 90, 95%, very, very good protection. Yes, these have reaction, giving some nodules, maybe some fever, maybe some swelling, but giving good protection for 1 year. This need to be prepared. Most of vaccines for these two diseases must be before monsoon. If monsoon coming in Karachi, for example, in July, we need to make it in April or May. If coming in Punjab in August, we need to make vaccination before raining season, before monsoon, not now. And if you did not make, you can make now. So vaccine lambskin is very good, give good result, but unfortunately 3-day sickness vaccine is not giving more than 65% protection. Mean we can see in all over the world, people make one-time vaccine, two-time vaccines, and still they have coming every year in Pakistan or every 2 years, or maybe 1 year strong and 1 year mild, but it's coming. Vaccinated farm, not vaccinated farm, it is coming. But we will tell again, this is vaccine will make it clinical signs will be less, not severe clinical signs or mild clinical signs. Morbidity will be less, 1, 2%, 3%, not 20, 30, 50% can be reached, 80% can reach in unvaccinated herd. If you have vaccinated herd, good vaccine, then you will have less morbidity, less mortality also. जी दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जैसे कुछ बताया कि हमें जो वैक्सीनेशन है, क्लीनिंग है और ड्रेनेज सिस्टम है, ये मानसून की सीज़न स्टार्ट होने से पहले प्लान करना चाहिए कि हमारी वैक्सीनेशन ऑलरेडी डन हो। अगर जैसे कि मानसून शुरू हो जाता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो हमारी वैक्सीनेशन एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर होने चाहिए, एलएसडी के लिए भी और 3 डे सिकनेस के लिए भी। एलएसडी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एलएसडी की वैक्सीनेशन 90 से 95% तक प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा जो 3 डे सिकनेस वैक्सीनेशन है, उसमें इतनी जो केसेस आउटब्रेक है फिर भी होती है जो हार्ड वैक्सीनेटेड हो, तो उसमें वैक्सीनेशंस की वैक्सीन जो प्रोटेक्शन दे रही है वो 65% दे रही है। और इवन पाकिस्तान में ये हर साल ये डिजीज़ रिपोर्ट होती है, मतलब एक साल के लिए स्ट्रांग होती है और एक साल के लिए माइल्ड होती है। तो इसका मतलब है जो भी वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं फार्मर, तो 65% हमें उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जिन फार्मर ने एलएसडी और 3 डे सिकनेस के लिए वैक्सीनेशन अगर नहीं किए, तो वो अभी भी वैक्सीन कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उनको टाइम मिल जाए और वो अपने हार्ट को कुछ इम्यूनिटी दे सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर मानसून का सीज़न स्टार्ट है, जैसे कि ऑलरेडी अभी स्टार्ट है, तो उसमें क्या प्लान करना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपना इम्प्रूव करना चाहिए, जहाँ भी पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, उसको ड्रेन करना चाहिए। और अगर जिस एरिया पे ज़ाहिर बात है 100% ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करता है, कुछ एरिया पे पानी खड़ा हो जाता है, तो उस पर डीजल स्प्रे करना चाहिए, डीजल या केरोसिन ऑयल। इसके अलावा जो इंजन यूज़ ऑयल है वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मॉस्किटो और फ्लाइज की ब्रीडिंग्स को स्टॉप कर देते हैं, ब्रीडिंग एरिया को कंट्रोल करती है। तो इन डिजीज़ पे कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है और जो इकोनॉमिकल लॉसेज है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं। व्हाट्स योर सजेशंस? आई वांट दैट्स फाइनल सजेशंस दैट यू कैन गिव टू द आवर फार्मर दैट व्हाट दे कैन डू राइट नाउ, बिकॉज इन पंजाब सम एरिया दिस 3 डे sickness is already reported. Yes, sir. So in case of outbreak, please, some people are asking that can they make vaccination or no? Are they already vaccinated their herd before, so they can repeat this vaccine again or no? Yes, sir. One point I forgot to tell you about Fogger also for mosquito. We can use Fogger 3 times in early morning, evening, and in midday. Is Fogger. Before we speak in one video about lambskin disease, no need to discuss more about lambskin disease vaccine. You can go to this video in same channel about prevention, control, clinical signs. Everyone now know lambskin disease, nodules, shape, everything. So we'll discuss shortly about 3-day sickness. Then you have cows will come with fever, come with lameness, and they have two forms. This locomotion form and there is respiratory form. Locomotion form is very simple. It means myositis and they make lameness with fever with constipation. And this is also making hypocalcemia. So maybe cows will be downer. And you will see more in pregnant heifers and in growing like this. So fast you can make proper diagnosis, and this will be easy now because it's really sickness for 5 years now. So fever, constipation, lameness, respiratory distress, rapid respiration,
and maybe also subcutaneous emphysema. When you have clinical signs, you have to isolate this animal. You have to give antibiotic, have to give anti-inflammatory, and maybe you give also antibiotic for secondary bacterial infection, because some cases come with HS, and HS killing the animal. Mean animal died due to secondary bacterial infection, not due to disease. It's also not long-term disease like lumbar skin disease take 1-2 months, or like FMD take 10 days. It take 3 days. Animal will recover or will lose. Very important point. Very important point about emergency vaccine in 3-day sickness. We give emergency vaccine in lumbar skin. It's work after 14 days, 20 days, completely zero cases. In FMD, we use emergency vaccine. Okay. In 3-day sickness vaccine, they said not. Mean experts, they said not. Why not? Because you already give this live attenuated vaccine, and you already we give in April or March, April or May. Then you have antibodies present in blood. When you give live attenuated vaccine again, mean you are giving antigen again. Then antigen will come with react with antibody, which is already present in blood, and this will make neutralization, and this will leave the animal without immunity. This is one issue. Second issue, you are increasing stress on the animal, because we agreed before that 3-day sickness, not like FMD vaccine, not like lumbar skin disease vaccine giving full protection or 90% or more. No, it's giving 65. If you give 1 time, 2 times, 3 times, 10 times, it will not improve the immunity. It will increase stress on animal. It will make neutralization. It will leave your animal more without immunity. So for first time, if you give dose and the booster dose, and annually you will give 1 dose, if you already have been vaccinated, so it is not recommended to vaccinate again. Only, as we said, biosecurity, and you fight with mosquito and transmission factors. डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी 3-day sickness डिजीज़ के साइन सिम्टम भी बताए, और मोस्टली हमारे जितने भी पाकिस्तान में वेटनेरियन है, वेट असिस्टेंट है, प्रैक्टिशनर है, वो ऑलरेडी फेमिलियर है इस डिज़ीज़ के साथ, और वो डायग्नोस कर सकते हैं प्रॉपरली, आई थिंक सो। उन्होंने एक और बात बताई है कि जिस तरह इमरजेंसी वैक्सीन हम एफएमडी में करते हैं और एलएसटी में करते हैं, जब भी डिजीज़ की आउटब्रेक हो जाती है तो उसमें इमरजेंसी वैक्सीनेशन करते हैं। लेकिन इस केस में डॉक्टर साहब ने क्लियर बताया कि इस केस में हम इमरजेंसी वैक्सीनेशन नहीं करते। अगर आपका हार्ट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो तो आप इस केस में इमरजेंसी वैक्सीन नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? उन्होंने इसकी अच्छी साफ अल्फाज में वजाहत की है कि आपके हार्ट ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद है। अगर आप उसमें दोबारा लैब एटेन्यूएटेड वैक्सीन के साथ वैक्सीनेट करोगे तो क्या हो जाएगा कि वो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और आपकी एनिमल विदाउट इम्यूनिटी रह जाएगी। तो उस केस में डिज़ीज़ की सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होगी और मे बी मॉर्टेलिटी भी इसके साथ हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये डिज़ीज़ जब आउटब्रेक हो जाए तो हमें वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसी टाइम हमें प्रिवेंटिव में मतलब क्लीनिंग और पॉवर वगैरह और फ्लाइज कंट्रोल पे काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो डॉक्टर साहब ने इंफॉर्मेशन शेयर किए वो मुफीद हो, और आई विल से अगेन थैंक यू टू डॉक्टर अबीब साहब दैट ही गिव हिज एक्सपीरियंस विद अस, and thank you sir. Thank you very much, sir. Thank you. جزاكم الله خير. السلام عليكم. Okay sir. Allah Hafiz. الله حافظ.